Hello everyone. Good afternoon to all of you. On behalf of Parul University, I welcome you all for the today's webinar on Be Yourself, Be Change. Right? And I welcome our today's expert, Ms. Deepa Panakkal. Welcome, madam. Thank you, ma'am. So our today's webinar is on Be Yourself, Change the Game. And our expert is Professor Deepa Panakkal. She is TEDx speaker. Ms. Deepa Panakkal, please accept this virtual bouquet of flower in this pandemic situation. Thanks for your spending your valuable time with us. I'm going to introduce our today's expert. Ms. Deepa Panakkal, she is TEDx speaker, educator, and trainer, soft skill and human values. Professor Deepa Panakkal is a well-acclaimed, zealous personality and an educator with over 10 years of experience. She is a TEDx speaker, referred to as the Inquisitive Educator, and also recognized by AICTE as an influential trainer of universal human values for teachers and students. She has a strong academic base in English and psychology, being among the top rankers in her post-graduation at MS University, in GPSC, that is Gujarat Public Service Commission, and in Maharashtra SET are few milestones to name. She has been awarded certification from NPTEL and British Council, and she has been serving as a judge at a national level debates since 2016, as actively conducting sessions on a variety of topics from soft skills, value education, stress management to adolescence psychology. She has been helping students overcome their academic and personal hurdles and has touched many lives through her empathic approach. So I welcome Ms. Deepa Panakkal. Still many more things about her, but not wasting much more time of audience. I'm handing over the session to Deepa. Please, ma'am. Thank you so much, ma'am. This really means a lot. I've been part of Parul, so coming back here is like all the more wonderful. Okay, very good afternoon to all of you who have gathered here and who are watching us right now. This very first step that you have taken of being part of this seminar. Okay, I appreciate that. A wholehearted welcome on that line. I'd like to start presenting my slides to you guys so we can go ahead with the seminar. So let me just start sharing my slides with you all right? Okay. Now, as you say, the session that we're going to take is going to be about Be Yourself, Change the Game. Okay, so what are we talking about here? So let me give you an idea as to what is going to be the flow of the seminar. आखिर हम लोग बात किस चीज पे करने वाले हैं, ठीक है? Well, we would be talking about certain qualities, कुछ ऐसी qualities जिनका आपकी success में बहुत बड़ा हाथ होता है. We will be talking about behavior and communication styles, बात करने का तरीका और चीजों की तरफ आपका respond करने का तरीका, right? We also would be talking about staying focused. What are the things, okay, that I need to put my energy in, and what are the things that I need to save it from? Okay, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, वो भी बात करेंगे. And yes, the values that keep you going. All right. Now, ये एक चीज है. Before I move on to discussing main things of the seminar today, I really want you to think about this. Okay. The most dangerous phrase in a language is we have always done it this way, right? Not being open to something new, okay, not being open to a new idea can actually stop your growth a lot. Okay, so हम लोग webinar जब शुरू कर रहे हैं तभी से I really want you to have this perspective in place that the more you listen and the more you're willing to learn, that much more your growth, right? If you want to change the game, first you need to know what the game is about, right? So accepting new knowledge is very important.
आई होप दैट इज द पर्सपेक्टिव, उस नजरिए से आप ये वेबिनार पूरा अटेंड करेंगे. ऑलराइट, हाफ ऑफ विजडम इज लर्निंग व्हाट टू अनलर्न. तरीके जो आपके लिए एक्चुअली वर्क कर रहे हैं, द काइंड ऑफ framework that you're following to get things done, are they actually that effective or not? When do you get to know that? Only when you come across another framework, right? So it's important to listen, it's important to observe, and it's very important to keep, that willingness to learn going, right? So that is the first thing I need you guys to keep in mind. Moving on, right now, take a pen, take a paper, and I really want you guys to write down which are the 3 most top priorities, most important priorities, the top priorities of your life today. As you sit here attending this webinar, आपके माइंड में कौन सी 3 चीजें हैं? लाइक मेरे लाइफ में यार ये 3 ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, हम लोगों की बात नहीं करेंगे, हम आपके गोल्स की बात करेंगे. ऑलराइट, जस्ट राइट इट डाउन. शुरुआत में ही मैं आपको अभी से इस बारे में ज्यादा नहीं पकाऊंगी, बट देन हम लोग आगे वेबिनार में इसके बारे में कुछ बात करेंगे. तो आपकी प्रायोरिटीज आपके पास पेपर पे होना, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट ऑन दैट. So think. If you get 1, equally good. If you get 2, even better. If you get 3, badhiya. Okay, something's wrong with that clock. So we'll do one thing. We'll not go by the clock. I'll tell you the time. You have 40 seconds more. जिनको तीनों प्रायोरिटीज मिल गई, बहुत बढ़िया. यानी आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है यही 3 है. जिनकी सिर्फ 2 आई, इवन बेटर, आपको 3 तक भी सोचने की जरूरत नहीं, आपको पता है मेरे को यही 2 पे फोकस करना है. जिनका सिर्फ 1 गोल आया, वेल गुड, यू आर वेरी क्लियर दैट दिस इज द थिंग दैट आई वांट. जिनका कुछ नहीं आया, कोई फिक्र नहीं. दैट मीन्स टुडे दिस इज वन थिंग आई डेफिनेटली डू फॉर श्योर. मैं अपनी प्रायोरिटीज डेफिनेटली लिख के क्लियर करूंगा या करूंगी. राइट, सो टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट इट. कीप दैट पेपर एंड पेन देयर विद यू. डू राइट योर प्रायोरिटीज देयर एंड लेट्स सी in what I discuss how it helps you understand what I'm discussing. Okay, your 1 minute is over, so I'm going to go ahead. Right now, this is another thing I want you guys to do. आपके पास मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा, whatever you're using, go to www.menti.com, menti.com. I'm flashing it on the screen, should be easy for you to follow. वहां जाके आपको ये कोड यूज करना है, 4371260. Okay, go to menti.com and put in this code. I've asked you a very simple question. What quality helps a person to be successful? All you have to do is put in this code and answer this question in 1 word. Okay, you can give only 1 answer, so what you feel is most important, just write it there. I'll wait for a few seconds before I go to that page, so I can show you कि आप लोगों ने actually results में डाला क्या है. Right? Okay, so let's just check what have you given me there. Okay, I'm moving on to menti.com. Let's see what are you giving me in your answers. Oh wow, this was quick. Okay, now if you look at the words that you gave me here, others if you want you can keep sending, not a problem. हम लोग सारे आंसर्स आने का वेट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा क्योंकि टाइम की हमारा एग्जैक्ट लिमिट है, so we'll go by that. If you look at the answers that have been given, never give up attitude, patience, determination, dedication, honesty, a balanced perspective. I believe the person was trying to say perspective. Wonderful. People are adding on more answers, so it will keep changing. Badhiya. Hard work, patience, determination, dedication, and honesty. ये maximum लोगों ने answer किया है. That's why this is coming here. Willingness to learn. Somebody was listening. Wonderful. Honesty, kindness. Wonderful. Look at the beauty of these answers. Never give up attitude, kindness, empathy, honesty. आपने सारे इतने जो मुझे बढ़िया आंसर्स दिए हैं. Okay, well I don't see degree being mentioned anywhere, right?
Okay, thank you so much, guys. I'll move on from here because हमें आगे का content cover करना है. Thank you for the brilliant answers. Okay, good job. Good job. Good job at that. Okay, so of all the answers you gave me, if you notice, आप में से किसी ने भी मुझे ये degrees, certificates, money, status, contacts, what we call networking है, जिसके बारे में लोग इतना टेंशन लेते हैं, मैम जिसके नेटवर्क ज्यादा है ना वो डेफिनेटली मुझसे आगे निकल जाएगा, ये सब नहीं आया. एंड यू आर ऑल पीपल हु आर आंसरिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. ऑल आपका ऑडियंस एक वेराइटी है उसमें. येट द काइंड ऑफ आंसर्स दैट केम दे रेफर टू दीज काइंड ऑफ स्किल्स मोर. आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी आप चीजों की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन सी चीज पे कितना गुस्सा, कौन सी चीज पे कितना उदास, ये सारी बातें. आप कितने अच्छे से अपना लीडरशिप, आप कितने अच्छे से अपने टीम को रख पाते हैं. If you see your patience, your dedication, your ability to communicate, all those wonderful answers that you gave me, वो सब इनमें कहीं पे जाते हैं, right? अब what is the idea of these skills? ये चीजें आपको कोई और देगा, बट ये चीजें ये हमारे हाथ में है दोस्त. This is something that I can work on. This is something that is within me, right? Every time I ask this question in any of the webinars that I take, this is the kind of answers I get. So we do know what really works for us, don't we? Right? So in that sense, अगर हमारी डिस्कशन का पूरा समरी लिया जाए, तो बेसिकली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? योर एबिलिटी टू नो योरसेल्फ. आपकी स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, स्ट्रेंथ को एनहांस करना, वीकनेस पे काम करना, ये तभी ही पॉसिबल है अगर आप खुद को जानते हो. और जो बंदा खुद को जानता है, nobody can stop him, right? So this is the major quality that we need to focus on. But then, do we really focus on this quality that much? सोचने वाली बात है दोस्त. Let me ask you a question to just prove my point. If I were to ask you, which is the most difficult question in an interview? When you face an interview, आपके लिए सबसे मुश्किल सवाल कौन सा होता है? Okay, now I'm not going to go to Menti and all, but I'll tell you, majority of the times the answer that I get is, tell me something about yourself. मैम अभी तक क्या बोलने का? ठीक है, हम अपने स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं, हम दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं, हम इवेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, but when it comes to talking about yourself, we start wondering, oh my God, what do I tell him? How much do we know ourselves confidently enough to talk about ourselves? Okay, changing the game is a different thing altogether. It's a second step. First step is to be yourself, and for that it is important that you know yourself. All right, now let me not bore you. We'll be using a few stories today, ताकि मेरी बातें अगर आपको content wise भी अगर आप भूल जाए, stories will make sure कि आपको याद रह जाए. All right, see now I'm in Mumbai, so ideally I'm a Mumbaikar. मेरी कोई कहानी लोकल ट्रेन के बिना तो हो नहीं सकती. But then let me not give you a wrong picture, हाँ बाबा. We never get to see a local train like this. The true picture is, हाँ, अब स्वाद आया. This is us, right? So now let me give you a story. All right. So what happens is, there is a man who is traveling in the train. बहुत ज़्यादा crowd है, धक्का मुक्की चालू है. So there is one chap who is standing at the door. उसके पीछे हमारी कहानी का हीरो. Okay, or we'll call him. What should we call him? So we'll call him Ramu. All right. So Ramu is standing behind this man. रामू को पीछे से धक्का लगा और बेचारा रामू सामने वाले बंदे पे जाके टकराया. The guy who was standing in front, he got very angry. He turned back and he started shouting abuses at Ramu. Now Ramu, poor thing, he felt very bad. Huh? The whole train is watching, everybody is looking at him, and अभी उस पे गालियां बरस रही है. He feels very bad. अगला स्टेशन आया, the guy who got angry, he got down, but Ramu is still feeling bad. Ramu leaves the train, he gets to his home. घर जाके जो भी उनसे बात कर रहा है, he is still angry. He is taking out all his anger on them. Okay, so Ramu is still not happy. Next day morning, he is getting ready for work. Today also he has to travel in a train. He gets into the train, but today he's made up his mind. Plan है. क्या plan है? Today, I will make sure that somebody else gets abused.
आज किसी और को गाली पड़ेगी और आज मैं तमाशा देखूंगा. So what does he do? When he sees that the crowd has gathered, सामने एक about 20-22 साल का एक लड़का खड़ा है और उसके आगे there is another person who's quite stout, healthy and standing in front. रामू ये 22 साल के लड़के को धक्का मार देता है थोड़ा सा, राइट, ताकि वो जाके सामने वाले से टकराए. So as expected, सामने वाला पलटता है and धना धन धन start. Okay, he gives all abuse if possible. But there is a small difference. After one station, the guy who was so angry and all abusive, he gets down, he's gone. And this boy, the 22-year-old, he gets back to listening to music and is standing aram se. Seems as if he's not even affected by it. So now Ramu gets curious. He goes to this boy. Acha yaar, sunna. You must have felt really bad, no? That this man said so bad words to you. Everybody was watching. He says, not really. अरे क्या बोलता है? तो ये 22 साल का लड़का इसको बोलता है, ये बंदा जो मुझे गालियां देकर गया, वो मुझे सिर्फ 2 मिनट से जानता है. मैं अपने आप को 22 साल से जानता हूं. I know it was not intentional. I apologize. He is not ready to accept it. क्या कर सकते हैं? Knowing yourself well, it's your biggest power, right? लोगों को हमें मैनिपुलेट कर पाना. आप में से काफी लोग, अगर मैं अभी पूछूं कि यार कितने लोग हैं जो किसी को ना नहीं बोल पाते, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप बिंदास हाथ खड़ा कर सकते हो. आई एम श्योर हम में से काफी लोग हैं जिसने इस बात पे हाथ ऊंचा किया होगा. ओके, सेइंग नो टू पीपल समटाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज हम अपनी फीलिंग्स को कम और उनकी फीलिंग्स को ज्यादा भाव देने लगते हैं. सेम वे समटाइम्स वी फील सो एंग्री, हमारा रिस्पॉन्स निकल जाता है एंड 2 मिनट के बाद हम सोचते हैं यार इतना नहीं बोलना चाहिए था. या फिर किसी की बात हमको इतना मन पे लग जाती है कि वो 1 मिनट का हादसा, it actually spoils your entire day. Sometimes for certain people, it just keeps going on in their mind, right? So you need to know yourself well so you can decide what things should affect you and to what extent. Okay? Imagine this. If you could do that, doesn't that make you really powerful? Okay, so that is what we are going to be talking about today. Self-awareness. Power of self-awareness, being yourself. Okay, that is your biggest strength. Because then, कोई आपको ये नहीं बोल सकता whether you are good enough or not. वो सवाल है ही नहीं, comparison है ही नहीं बॉस. I'm good, right? I'm good. मेरे strengths है, मेरे weakness है, but since I know them and I'm working with them and working on them, so I'm good. It's not about if I'm good enough. Okay? ये भरोसा खुद पे, ये आपका सबसे बड़ा strength है. Okay? The reason why it is your biggest strength is because it keeps you aware about your own responses. Okay? मैं किस चीज पे कितना react करती हूँ, किस चीज को भाव देती हूँ, किस चीज को नहीं. This I can only decide when I know what triggers me. Right? So that is your biggest strength for sure. No doubts about that. Okay. Talking about communication and behavior. Now, I'm a person who has a background in both language and psychology, so I can tell you, ये दोनों ही जो terms हैं, communication and behavior, ये हम लोग एक हल्के से discussion में to cover it all, Herculean task, and it wouldn't be fair. So what I'll do is I'll give you a few terms. You can go ahead and read about them more, so you get to know what exactly am I trying to tell you. All right. So let me share a story with you first. So आपको ये terms दिमाग में ध्यान से बैठ जाएंगे. All right? Okay. So what happened is, you see this friend. Oh, sorry about that. You see this friend of ours. इसका नाम है Morris. Now Morris is a very friendly dog, okay, and he is very calm, and he is very dedicated to his master. His master has not been keeping well. तबीयत कुछ थोड़ी गड़बड़ चल रही थी उनके मास्टर की. So what Morris would do is, every morning, with a small a packet kind of a thing in his mouth, he would go in the neighborhood and चलते चलते वो newspaper and एक दो चीजें, people recognize Morris, so they very nicely give him things. Okay, and Morris brings this back to his master. Now one day it so happened that while Morris was walking, इनके neighborhood में एक बंगला है, एक villa, all right.
which was closed for years. Nobody was staying there. But आज कुछ ऐसा हुआ that when Morris was walking, right when he reached the gate, he heard a strong barking sound. No, wow, 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 बहुत जोर से. Morris घबरा गया. Like, a place that is closed, there's suddenly so much of barking happening. So he looked back. Like, who's there? There was a great big black dog standing there. So Morris went and said, "Hello, my friend." Wow. Morris is like, "Well, you could just say a hello." The black dog said, "Wow, hello." Morris said, "Why are you so angry?" So this dog says, "I'm supposed to be the guard here. I am the security of this big villa. So I'm going to bark at everyone." Wow, wow. So Morris said, "See, boss, I'm not here to take anything from your villa. Rather, I have a villa right by your side." Okay? He tries to explain, but this guy is not ready to listen. He goes on. Wow, wow. Morris says, "Okay, save your energy. I'm going. Bye-bye." And Morris walks away. So this goes on for almost a week or two. Every time Morris goes from there, Morris says a hello, and the answer is wow, wow. After 2 weeks, when Morris is walking from that same place, this time, he didn't hear the wow, wow. Barking nahi aaya. So Morris went back and saw. वहाँ पे क्या हो गया भाई? आज आवाज नहीं है. And Morris said, "Hello." So came a very nice, sweet sound. Okay, hello. Morris said, "Okay, now who's that?" So now there was a fluff ball. एक soft toy जैसे जो doggies आते हैं प्यारे प्यारे वाले, वैसा एक प्यारा सा एक fluff ball था वहाँ पे. So Morris ने बोला, "Oh, you're new here?" Fluff ball says, "Yes, I'm the new security to the villa." Morris says, "Okay, but then where is that big black dog?" "Oh, he was always shouting, making noise. Master is angry. Neighbors are angry." So they got rid of him. Okay, उसको भेज दिया. Morris said, "Okay, but my dear, you look very small and you look so sweet, but then how will you guard such a big villa?" So the fluff ball says, "Oh, that is very easy. Since I am so sweet and so nice, nobody would ever do anything wrong to me." Morris just smiles and says, "Oh, well, quite innocent you are. Well, take care. I'll see you every day." And Morris walks away. So for another 1 week or so, every time he wishes good morning, it is the fluff ball who says good morning. Okay, and that is going on. Second week happens that Morris is walking and he doesn't get to hear the sweet good morning. Rather, this time, when Morris says good morning, सामने से उतनी ही कड़क आवाज आती है, good morning. But कड़क लेकिन एकदम calm, अच्छी खासी आवाज. Morris says, "Oh, I got a new friend here." He says, "Yeah, you could say that." So Morris says, "There was a fluff ball here. What happened to her?" So this new dog says, "Yeah, actually 2 robbers had come. And while one thief went inside the house, the villa, to collect things, the other thief kept the fluff ball busy by playing with her. So obviously the owners of the villa were very angry, so they got rid of her." Okay, Morris says, "My dear friend, आपसे पहले यहाँ पे एक black dog भी आया, अभी एक fluff ball भी गई. So आपका क्या strategy है?" So this dog says very calmly, "Well, there's not a big complicated strategy to it. It is very simple. Not everybody who is crossing the road is a threat. So I don't waste my energy barking at everyone. Also, I know very clearly that not everyone who is trying to be sweet with me is actually out to do good. So I know where I have to be careful. And since I know my own strength, I know that when the time arrives, I will be able to fight it." Morris says, "Well, that's a very balanced self of yours. More power to you, my dear. I'll see you." Okay. Now, if you look at the story that I just narrated, आप अगर वो dark first वाले dog की बात करो, so much of energy is wasted in barking at everyone, including Morris, whom he sees every day, right? ऐसी कुछ चीजें जिनको आप जाने दे सकते हो, आप उसको भी नहीं छोड़ोगे, पूरा गुस्सा, there's a lot of energy being wasted there. Alright? दूसरा,
assuming that everyone who comes to you saying good things only means good for you. Now there we have a problem. That's why some of you, when I tell you, can you say no? Your answer is no, ma'am. किसी को ना कैसे बोलने का? बराबर? ठीक है? What are we talking about? किसी को वैल्यू ना करते हुए जब हम फुल टाइम उन पे एंगर, when you shout out orders, right? You cannot lead a team if your team doesn't feel valued, right? What kind of people would like to work with you if you're always shouting orders at them, right? Think about not just work, think about even profession. Profession same बात हो गई है. Think about even personal relationships. When you are with people, people who can give you that kind of confidence कि हाँ ठीक है आप responsible हो, आप संभाल लोगे. Value करना बहुत एक जरूरी चीज है आगे बढ़ने के लिए, right? We want to feel valued. Why wouldn't we want others to feel valued? जब हम दूसरों को थोड़ा सा नीचा दिखा के बात करते हैं, when we shout at people, when we don't make them feel valued, that is called an aggressive behavior. It's an aggressive communication style. We want everybody to stoop down. हर कोई हमारे सामने नीचे झुक के बात करना चाहिए. You know, that's a very wrong tendency to follow. It doesn't really help you grow. Okay, you may win positions, but you never get respect. And trust me, you want to go far, respect is what you need, right? दूसरा is passive, as I said, not being able to say no. Now इधर तकलीफ ये हो जाती है, हम लोग अपने interest पे ध्यान देते ही नहीं है. Okay, just imagine this. Somebody came to you and asked you to help them. अगर आप help कर सकते हैं, आप करेंगे. Let's say आपको 2-3 deadlines meet करनी है. आपके पास इतना काम है. You have so much work. You have to meet 2-3 deadlines in the next 2-3 days. So you tell this person, you know what? I really want to help you, but then could you come tomorrow? Or maybe the day after, and maybe we can work on that day because right now I'm really busy. So are you not giving him respect? You are. You're still trying to accommodate the person, right? But also you know your priorities. So आप पहले prioritize करो, बाद में accommodate करो ना. ठीक है? अब इसमें मैम उसको बुरा लग जाएगा. ठीक है, चलो अब ये वाला साइड भी पकड़ते हैं. The person who really knows you, the person who really cares for you, will always care for your feelings and your time as well. So actually अगर उस काम के लिए आपकी expertise required है, that work and that person will be willing to wait for you, right? But then that work could be done even without you and it is urgent. They will find someone who can help them through. All right? हो पाए या ना हो पाए दोनों ही चीजें, that one moment of you saying no will not make any sensible person define you. मेरा एक बार ना कहना और मेरा रोजाना बात करने का तरीका, आप किस बेसिस पे मुझे जज करना चाहते हैं, राइट? अगर आप सिर्फ एक मोमेंट पे जज कर रहे हैं, या फिर वो मेरी गलती कैसे हुई, बराबर है? So we say that आपका एग्रेसिव होना, किसी को नीचा दिखाना, या पैसिव हो जाना, अपने आप के लिए खड़े ना होना, दोनों चीजें गलत. Rather, we always be assertive. We respect people and we respect ourselves too. दोनों चीजें जरूरी है, right? So, I like to share these two quotes with you guys. I think that will reinforce the idea that we just discussed. Cool the words down before they come out of your mouth. Avoid serious burns. If these are hot words, well, we are also feeling the burns, aren't we? Right? And if you look here, setting boundaries is healthy. Okay? We love people, we care for them, we'll do whatever we can for them. Yes, do that. But at the same time, make sure you're giving yourself, अपना self-respect, आप दाव पे नहीं लगाते हो, because anything that you do that is not giving you that self-respect, you are going to regret it later. So I don't see how it will be healthy for that relationship or healthy to that work experience, right? We always hear people saying that people don't leave stress, they leave toxic environments, right? So काम छोड़ने का काफी लोगों का रीजन ये हो जाता है कभी-कभी. They can't put up with that kind of people around them. Okay? So we can't change people. What can we change? We can change our responses. Okay? So we have to be more stronger about it. That is one idea I wanted to share with you today. Okay, now this is one question I want you to visualize. Mind में जरा सा अपना visual दौड़ा के देखना. What is the first thing you do when your leg hits a stone or something?
Okay, there's a little spelling mistake there. When your leg hits a stone or something is what I meant. Okay, चलते चलते आपका पाँव किसी टेबल से या कोई स्टोन से या अपने बेड के साइड पे, मेरे साथ ये अक्सर होता है, ओके, लग गया पाँव, आपका सबसे पहला रेस्पॉन्स क्या होता है? Now think about it, okay? Now some of you, let me tell you the common answers that I get. Some of you will say, मैम पाँव लगा देखूंगा, ठीक है, किस चीज पे जाके पाँव लगा? Somebody else says, किस फिंगर पे पाँव लगा वो देखूंगा. कोई और कहता है कितना लगा वो देखूंगा. कोई और कहता है वो से चिल्लाऊंगा, वो चालू रहेगा. कोई और कहता है मैम चिल्लाऊंगा और ऐसे वर्ड बोलूंगा जो मैं आपको नहीं बता सकता. ओके, सो दिस इज फाइन, बट देन डिड यू रियलाइज दैट आपके साथ एक्चुअली ये सब होने से पहले, आप बैठ के रोना मेरा पाँव ये वो सब करने से पहले, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हेन आई एम सेइंग दिस, आपका पाँव जहां पे भी जाके टकराएगा, आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स इज द लेग गेट्स पुल्ड बैक. ओके, मेरा पाँव अगर बेड से टकराया है, मैं पाँव अपना बेड पे जहां पे लगा है वहीं पे रख के आ ऊ ई नहीं चिल्लाती हूँ, राइट? माई लेग इज ऑलरेडी कम बैक फ्रॉम द प्लेस दैट इट गॉट हर्ट, राइट? हमारी बॉडी का एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें डेंजर से बचाने के लिए काफी एक्टिव रहता है. So when I know if I'm working in the kitchen and I have something, or when you guys in the chemistry lab, and if the burner is on, आप थोड़ा साइड पे जाते हो, the minute you realize that the heat is increasing, there's a little temperature that you feel on your arm, फटाक से आर्म पीछे आ जाता है. आप सोचने समझने नहीं बैठते, उससे पहले ये हो जाता है, राइट? What are these things? ये हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो फिजिकली तो हमारी बॉडी अपने आप में काफी एक्टिव है कि जहां पे भी आपका हाथ कोई अगर कैंडल के पास लेके जा रहा हो, आप फटाक से उंगली खींच लेते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें फिजिकली तो होती हैं, बट इमोशनली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करने की जिम्मेदारी वो हमारी है. वी हैव टू कॉन्शियसली डू इट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू अ लिटिल फर्दर. डिफेंस मैकेनिज्म हमारा तरीका है, हमारे डिफिकल्ट फीलिंग्स, कोई मोमेंट में अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल है, कोई मोमेंट में आपको बहुत रोना आ रहा है, यू आर वेरी सैड, अ मोमेंट वेयर यू आर रियली डिसअपॉइंटेड, अ मोमेंट वेयर यू आर वेरी एंग्री, ऑलराइट? हाउ डू यू चूज टू हैंडल दैट? ओके, दैट्स योर डिफेंस मैकेनिज्म. ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग विद यू डिफेंस मैकेनिज्म जो एक्चुअली हमारे लिए फायदा नहीं करते, ठीक है? पहले उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ये ज्यादा करते हैं, ऑलराइट? इनके बारे में बात करते हैं. This thing, kicking the dog, okay, it is also called, इसका technical term is displacement, alright? अब इसका मतलब क्या है? Imagine this, मेरी HOD को suppose मेरे प्रिंसिपल से डांट पड़ी है, alright? मैं गई कुछ काम के लिए, छुट्टी वुट्टी मांगने के लिए अपनी HOD के पास, बिना ये जाने कि उनके साथ क्या हुआ है. I enter and I'm like, मैम छुट्टी चाहिए. She says come later. I'm like, नहीं मैम आप कैंसिल कर दीजिए ना, मुझे कल के लिए चाहिए. She gives me a nice thinking, तो मैं बाहर आई, अब मैं गुस्से में हूँ. So there is a student who comes, ma'am, good morning, very smiley because I'm usually very nice to them, and today I'm very angry, so I'm like, काहे का good morning, go. Now that poor student doesn't know कि मेरे साथ क्या हुआ, I don't know HOD के साथ क्या हुआ, HOD doesn't know the principal के साथ क्या हुआ, that ये पूरा chain reaction बनता चला गया, right? When we feel that जहां से हमारा source of stress आया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमारा इमीडिएट रेस्पॉन्स कभी कभी ये हो जाता है, वी नाइसली सेंड इट फॉरवर्ड टू समबडी एल्स. सो इफ आई एम एंग्री एट समवन एंड आई सी अ डॉग नाइसली स्लीपिंग ऑन द रोड, पुअर डॉग इज ओनली स्लीपिंग, बट आई एनीवे गो किक हिम हार्ड, राइट? द पॉइंट इज, आपके साथ जो हुआ और आपने किसी के और के साथ जो ये सेम हरकत की, एग्रेशन वाली, इसमें आपका फीलिंग डिड इट रिड्यूस? I don't think so. You're still feeling bad, right? Another thing is rationalization. हम लोग ना बहाने बहुत बनाते हैं. We know कि maybe we procrastinated, we became a little lazy, तो कुछ काम रह गया या कुछ पढ़ाई रह गई, तो शायद मार्क्स कम आ गए. But then हम लोग खुद को समझाते जाएंगे, नहीं वो ना actually that teacher no, she doesn't like me. That's why. Okay? या फिर मेरी सुपीरियर मुझे अगर फीडबैक देती है that आपके सेशन में ना सब बढ़िया था, आप सिर्फ ये एक चीज थोड़ा कर लो.
नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं है, मतलब उनके सामने नहीं बोलेंगे पर मन में सोच लिया पहले से, हाँ ये क्या है, मेरे को मालूम है मेरा बहुत अच्छा था, उनको मेरे से जलन है इसलिए वो ऐसा बोल रही है। ओके, नाउ व्हाट आर यू डूइंग? व्हेन यू रैशनलाइज थिंग्स बियॉन्ड द पॉइंट यू बिकम डिफेंसिव। ओके, हम इतना खुद को संभालने, इतना डिफेंड करने लगते हैं। एज आई सेड, रिमेंबर स्टार्टिंग का हमारा पॉइंट, listening and being open to new learning. This is very important. Okay, if you're rationalizing too much, if you're way too defensive, how do you think you will grow? How do you think you will learn? Right? Reaction formation. Now this happens when we fall for expectations. It is expected कि आप ये टाइम पे ऐसा करें, it is expected कि आपको इस जगह पे हम लोग लेकर गए तो आप खुश रहोगे। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको मैंने कहीं पे कुछ करने को दे दिया, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप बहुत खुश होंगे उस काम से। यू आर नॉट हैप्पी, बट देन सिंस यू नो दैट आई एम योर टीचर एंड आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, आप बेचारे अंदर से जितने भी दुखी हैं आप बाहर बहुत स्ट्रांग दिखाओगे। समटाइम्स इन स्टीरियोटाइप्स वी डू दिस, यू नो, मर्द को दर्द नहीं होता, राइट? तो बेचारा मर्द कहीं पर रोने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्यों? अरे फिर वो मर्द थोड़ी कहलाएगा। ओके, तो रिएक्शन फॉर्मेशन इज जब आप अंदर से कुछ और फील कर रहे हैं लेकिन बाहर आप जस्ट सो दैट यू गेट बेटर एक्सेप्टेंस आप वो रियलिटी नहीं दिखाते हैं। डिनायल एज द वर्ड इन इटसेल्फ सेज, हम लोग मानते ही नहीं कि हम में कोई खामी है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, दैट मेक्स अस वेरी एरोगेंट। ओके, दैट कैन मेक अस रियली एरोगेंट एंड दैट कैन रियली स्टॉप आवर ग्रोथ। ये सारी चीजें और बहुत सी लंबी लिस्ट है, मैं सिर्फ आपके एग्जाम्पल्स के लिए अभी सिर्फ इतना ले रही हूँ। ये सारी चीजें हमारा करने का नजरिया, व्हाई वी डू दिस, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स, वी डोंट वांट टू गेट हर्ट, वी डोंट वांट टू फील ह्यूमिलिएटेड। हमें किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, क्योंकि हमें बताया गया है कि कमजोरी दिखाना ही अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट वीकनेस, इज व्हाट पीपल टेल यू। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट। Alright, I'll give you one example from my own life. I remember in my early years when I started teaching, somebody mentioned that whenever you are in a classroom, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, कभी भी स्टूडेंट्स को ये मत बोलना कि आपको नहीं आता है, उन्हें चुप करा के बिठा देना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। मुझे तभी भी वो चीज हजम नहीं हुई थी, एंड नाउ आफ्टर 10-11 years into teaching, I can tell you, मेरे बच्चों के साथ मेरा ओपन रहना, उनका कोई सवाल आने पे ये एक्सेप्ट करना कि अरे यार ये मैंने नहीं सोचा था, ये मुझे एक्चुअली पता करना पड़ेगा, भी पता कर, मैं भी पता करती हूँ, अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में जरूर बात करेंगे। Whenever I have done this, the next session when I take, I make it a point to bring it up. अरे याद है मैं वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी, चलो इसके बारे में जरा बात करते हैं। एंड ब्यूटीफुली इनफ क्लास में कुछ बच्चे होते ही हैं जो उसको पढ़ के आए होते हैं। That, my friends, is a very enriching experience. अगर आपको अपने ही वीकनेसेस का डर ना हो, अपनी वल्नरेबिलिटी का अगर आपको डर ना हो, तो यार आपको फिर मैनिपुलेट करेगा कौन? राइट? यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल ह्यूमिलिटी, हम्बल होना। राइट? जितना ज्यादा सीखते हैं आप एक्चुअली उतना छाती फूल के एरोगेंट नहीं, जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा हम समझते हैं कि उतना ज्यादा सीखने के लिए बाकी है। The more I learn, the more I grow, that much